lifetime bar. It's illogical. That's what I'm saying. Article 62 may, if there is a declaration, that person is not honest. Why he was not honest? Because in my case... Now you've taken a leap of faith. No, my lord. No. Again, अब आ जाती बात ये leap of faith वाली. So you are saying honest. Now honest. Suppose okay, let's take another case. Make it simple. He honestly declares in his nomination papers that he's a matriculate. He honestly declares in his paper that he's 16 years of age. Honestly, उसने लिखा 16 साल का हूँ. Consequence तो वही होगा ना. If he is not 16 years of age, भाई वो कह रहा है मैं हूँ 16 साल का. If he is not 16 years of age and he is 14 years of age, अब बात नहीं समझ रहे हैं ना. 25 साल का सिर्फ लड़ सकता है ना इलेक्शन. वो सचमुच कहता है मैं 16 साल का हूँ. वो सचमुच कहता है मैं ग्रेजुएट ना हूँ. आप इसको नेचुरली कांट कंटेस्ट इलेक्शन. सो ये जो ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी वाली बात तो बिकम्स इररेलेवेंट. इट्स अ फैक्चुअल डिटर्मिनेशन. That's what I'm saying. Fact. Who has to do the factual determination? चले ओके आगे बढ़े. मैं Only election tribunal through recording of evidence. We've understood the first point, please. Now my Move on second to the point. next point, please. The duration part. इसी पे देखें ना, जो फर्स्ट आपने कहा कि प्री इलेक्शन जो उसकी नॉमिनेशन पेपर की रिजेक्शन है, that does not cover the grounds mentioned in 68. वो तो होने ही आफ्टर द इलेक्शन है. After the election. तो इसलिए वो तो जस्ट रिजेक्शन ऑफ द पेपर्स एज पर योर आर्गुमेंट्स. That is my argument. कोई डिक्लेरेशन कोई फर्दर नहीं होती. वो क्वालिफाइड था या नहीं था पहली डेट के ऊपर, वो तो रिटर्निंग ऑफिसर ने चेक करना है ना. अगर रिजेक्ट होगा तो अपील हो जाएगी, अगर कोई अपोज करेगा तो भी अपील हो जाएगी. ठीक है ना. मगर बात क्वेश्चन इज दिस के आफ्टर सेवरल इयर्स वो कहेंगे इवन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग योर नॉमिनेशन पेपर यू वर डिस्क्वालिफाइड. दैट डिक्लेरेशन इज टू बी गिवन बाय विच कोर्ट? Election tribunal. Election tribunal. We've understood that, Mr. Forum. Now I will. Forum, let's proceed further. एक बात इसमें और बता दें. इलेक्शन ट्रिब्यूनल क्या डिस्क्वालिफिकेशन 63 आर्टिकल 63 से हट कर दे सकती है? और अगर कोई डिक्लेरेशन वो कर दे कि डिस्क्वालिफाइड और वो डिस्क्वालिफिकेशन 63 में नहीं आता, नहीं दे. क्या उसकी बुनियाद पर नहीं दे. इवन फॉर सिंगल डे ही कैन बी बार्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग? Election tribunal has to decide on the basis of 62 for qualification. No, and 63. disqualification is 63. This is clear. If any declaration is made by the tribunal which is not in accordance with Article 63, whether on that basis, even on the declaration of tribunal, somebody can be debarred from life or even for a day. No, my lord. Without trial cannot. Even trial is conducted, the tribunal come to the Even after trial it cannot. वो कह देता है कि disqualified. Without the ground given in 63, he cannot. Mr. Forum, could we just summarize what's happened? Your submission is that, first of all, disqualification can only come through a plenary court of plenary jurisdiction, plus the election tribunal and the appellate forum hearing that election tribunal's appeal. That's one. And declaration cannot come from any other source. Change here. मैं कुछ और कहना चाहता My lord. So this we've understood. I'm just saying that the premises on which Samuel Baloch proceeds is that once that declaration is in the field, that you're disqualified. My lord. Unless that declaration is set aside, you remain disqualified. That's the premise of Samuel Baloch, number one. Number two, Samuel Baloch also says that declaration is not right in your face, saying that you infer from the circumstances of the case. For example, वो कहेंगे कि आपने misdeclaration की है, इससे infer कर रहे हैं आप honest नहीं. Because nobody is directly, इस पे तो evidence नहीं ना आप honest है, I mean आप infer कर रहे हैं. That's what Samuel Baloch also says. So you construct it, you say कि आपका form गलत था, आपका ये गलत था, इससे हम construct ये करते हैं कि आप अमीन नहीं हैं. These are the two premises on which Samuel Baloch proceeds. Now we just need to understand whether at all the fact that the disqualification stands can continue forever, and if that disqualification was taken into a criminal proceedings and he went through age, 63 age, and went through a actual conviction, he comes back. And there are a number of other offenses where he commits even a heinous crime, he comes back. तो बस इसका हमें आप बताइए कि the fact that Samuel Baloch goes on the premise that declaration on the civil side done will continue as long as that declaration is set aside. My lord has properly rephrased Samuel Baloch, but my argument is a bit different from that. Right. My argument is any declaration coming from
a high court in a constitutional We jurisdiction. understood, that's not a declaration. So that's all not a those declaration. declarations So are the out. only court of plenary jurisdiction Understood. is आगे election. बढ़ें. हाँ, ये समझ Understood. गया. आगे चलें. आगे चलें. Now, the whole argument revolves around whether Article 62 and 63 are inherently same or distinct. If they are inherently same, they can be used interchangeably. Then we can interpret 62(1)(f) in view of 63(1)(h). But if they are distinct, then we cannot interpret these two. We cannot try to resolve the ambiguity. So I have to demonstrate that Article 62 is distinct than Article 63. Is it not dependent? Article 62 is not dependent upon 63. No, my lord. How do I demonstrate that? If I just go to Article 62, it says, a person shall not be qualified to be elected or chosen as a member of Majlis Shura unless it talks about an event prior to the election. Yes, yes, yes. चलिए थोड़ा जल्दी करें ना, पढ़ चुके हैं. Yesterday. My lord, 63. I don't see much turning on your point, but चलें, proceed with it. A person shall be disqualified from being elected or chosen as and from being a member of Majlis Shura if in 63 after the election, after the he becomes member, the event, any of the event given in 63 can trigger and he can be disqualified. But in 62, after he has election की आप बात no कर रहे हैं. event subsequent to the nomination can disqualify him. I don't agree with you, because if that is the case, then a non-citizen can contest elections, which is not provided for in 63, which is only provided for in 62. So I don't think this, जो आपने distinction draw की है, I don't think anything turns on it. My lord, 62 He says he's a citizen of Pakistan. This provision is not found mentioned in 63. Suppose a non-citizen files in a nomination papers and somehow gets elected. So you mean to say that challenge cannot be made about him? I would not agree with that proposition. My lord, because entire yeah. section of 62 has to be read in view of the opening clause. Article. It says, a person shall not be qualified to be elected or chosen. कुछ हुई तो नहीं था. I think अमेरिका Court where he was declared non-righteous. So what are the likelihood? No, ये बात आपकी, sorry, doesn't hold any water. Let's read first disqualification. He is a citizen of Pakistan. Suppose Mr. James Gray from America comes and contests, born American citizens, never been a Pakistani citizen, and gets elected. Please wait. Now go to 63(1)(c). He ceases to be a citizen of Pakistan. That is, a person was a citizen of Pakistan, has now taken on citizenship of America. So you are saying, yes, once that somehow Mr. James Gray got elected, you can't touch him now. Yes, sorry to say, ये आप ऐसा distinction not draw My करें. lord, I am not saying this. Mr. Khurram, there's one way of looking at it. Just read the first line of 62 and the first line of 63. It will show to you that it's interchangeable. There is hardly any difference. A person shall not be qualified. to be elected. रुक जाएं. आप 63 पढ़ें. A person shall not be Shall be disqualified. From being person elected. shall be disqualified. From being elected. So From both being are elected. happening before the election has taken place. Elected The or word is- chosen. हाँ. वही बात. दोनों चीजें एक है. फर्क नहीं पड़ना Disqualified or qualified है, but it's synonymous. I mean, it makes My no lord, difference. 63 का जो second तो फर्क क्या पड़ना है इस आर्गुमेंट से आपके? How will it support you?
So because if I can establish, if I can convince my lordships that they are two distinct sections because of their, Of course, there are two distinct sections, but what will turn on it? ये बताएं ना. then we have to interpret 62(1)(f only. तो वही उसी पे तो आप हमको ले जा And रहे we हो. do not have to interpret 62(1)(f in view of 63(1)(h. चलें 62(1)(f) को कर लेना फिर आप. आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि 62 and 63 are distinct articles and we cannot interchangeably read them to give them a meaning. My lord. So उनको separate पढ़ेंगे, उनको separate. We've understood your point. आगे बढ़े. थोड़ा सा स्पीड कर ले फिर. We don't want to leave this case unresolved. 10-15 more minutes. Now, when I distinguish that they are two distinct, then we have to read 62(1)(f on its own. Every word has to be given its meaning. चले चले थोड़ा जल्दी करें. Mission is that when we will read 62, then as long as the declaration by a court of law is in field, disqualification will remain. Court of law declaration is the Supreme Court itself. ये point पे आ जाइए ना. Supreme Court itself cannot give in any other jurisdiction other than in its appellate jurisdiction हो गया from ना the election आपने tribunal. अच्छा. आपका फिर Samuel Beloch वाला argument है ना कि once the declaration is there, 62(1)(f) has to be read alone. Once the declaration stands, disqualification stands. My lord. And it goes on as long as the disqualification. So the question to you is that we have to look at the Constitution in totality as a whole. Does it not appear odd to you that for other crimes as big as perhaps treason in G and others, you can always come back and contest election? It's not a lifetime situation. But for a civil wrong, which could be as small as committing a misdemeanor of misdeclaration or just lying through you've omitted one entry in a return, the punishment in a way is for life. But if I were to go murder somebody, if I would commit treason, if I were to kidnapping, I could come back and contest election. Where from the tribunal gets the powers for life time disqualification? It has declared. No, where from gets the powers to declare him Has for life? declared a decree given remains intact for all purposes. Fair enough, we've understood that. आगे बढ़े. चलें next point. Now this argument basically it lies in Islamic principles. If you look at PPC, out of all those offenses, there are very few offenses in which mens rea is dishonesty. My submission is wherever mens rea is dishonesty, we are talking about public office holder. जो आपने you just very casually referred to Islam, either back it up because I completely disagree with you. You have to back it up. If your contention is agreed, there were those who were violently opposed to Islam, and then they became Khalifs, Khulfa Rashideen. तो वो आ ही नहीं सकते थे फिर वापस. This just don't throw in Islam just like that. It is contrary to Islamic injunctions. तौबा का प्रिंसिपल है, राय रास्त पे प्रिंसिपल वापस आने का प्रिंसिपल है, मुस्तकीम शारे मुस्तकीम पे वापस आने का प्रिंसिपल है. शुरू में तो 2-4 ही मुसलमान थे. I mean, we are. तो ये आप ऐसे just don't throw in Islam to give it a validity. No, my lord. What I am submitting is, if repentance or tawbah, when we look at it, रिपेंटेंस और तौबा की तो बात से आगे मैं चला गया हूँ. that's what I am submitting. These are three things kept by God to Himself.
Number one, Not at all. Izzat Zillat. Not at all. Let me make my submission. No, submission, you refer to the Holy Quran. You can't just make a submissions contrary to Islamic principles like this. ऐसे नहीं होगा. But I changed the subject a little. Let me just introduce one other aspect. Let's stay on 62(1)(f). If you look at 62, some of the disqualifications or qualifications are mentioned in the Constitution itself, like he has to be a citizen, the age and all. This is specifically provided. 62(1)(f) brings in a disqualification from a declaration from another court under some law, not the Constitution. It is a declaration of disqualification under declaration of contrary under some law. And if the law Parliament goes ahead and fixes that law and says any such declaration of that law has to be for 5 years, that is actually not tampering with the Constitution. It is providing that that any declaration in 62(1)(f) is arising out of a law, not of the Constitution. Because court of law ne karni hai na disqualification. That disqualification is arising out of a law, and the Parliament goes ahead and says any disqualification under the law has to be for 5 years. So then, with that 5 years amendment brought in, isn't the period being provided for 62(1)(f)? Because the Constitution itself doesn't give an unlimited period. It is relying on a declaration coming out of a law. And law has been corrected and given a period. So there's a distinction. Had there been a constitutional provision, disqualification like age being 25, then perhaps, to my mind, legislation could not do it through ordinary legislation. Constitutional amendment was required. But in this case, the declaration emanates from the law itself. So law is being given a certain time frame. Is pe kuch roshni dal? My lord, it depends on the validity of the law. That's why I tried to argue that under what proceedings we are before my lordships. I rely on PLD 2012 Supreme Court 923, Baz Muhammad Kakar Federation of Pakistan. It is the case where Contempt of Court Act 2012. आपने सारा आर्गुमेंट सुना हुआ है, proposition बता देना please. My proposition is through ordinary law, Parliament cannot amend the Constitution. No, fair enough. It has not amended the That's what I'm trying to tell We you. have added in the Constitution because how do I demonstrate that whether the court can amend the Constitution, court can interpret it? interpret in a manner to amend the Constitution or to No, my read lord. into the No, Constitution. my lord. So this is what we are asking from you, whether the interpretation can be done. देखिए इसमें एक बात आप ये आप कह रहे हैं 62(1)(f) में ये बताया गया है कि डिक्लेरेशन होना चाहिए कोर्ट से, और आपने कहा कि डिक्लेरेशन सिर्फ ट्राइब्यूनल दे सकता है. ट्राइब्यूनल अंडर सेक्शन 157 वो ग्राउंड्स बताए गए, ठीक. क्या उन ग्राउंड्स में ये बात है कि ट्राइब्यूनल इस बात पे आपको डिस्क्वालीफाई कर सकता है कि आप राइटियस नहीं हो, आपको सजेस्ट नहीं हो, आप अमीन नहीं हो, आप सादिक नहीं हो? ऐसी डिक्लेरेशन आएगी तो 162(1)(f) इस्तेमाल होगा, अदरवाइज नहीं होगा. That's what I'm saying. That in my case, FA degree was forged, BA degree was forged. Trial can आप हमें डिक्लेरेशन कहाँ से आया आपके केस में? Action Tribunal. देखिए खुरम साहब एक चीज है, देखिए speaking for myself, there is no confusion in my mind that to set aside a judgment, the premises on which that judgment stands needs to be taken away. So if the judgment stands on a law, then there could be an amendment in the law, and that foundation of that judgment on which it stands is taken away, and that judgment is nullified. If the judgment stands on the Constitution, constitutional amendment is required to take care of. There's no, as far as I'm concerned, no. I'm saying in this particular case, 62(1)(f) is not a disqualification. The judgment does not stand on 62(1)(f) as such. It stands on a declaration by a court of law. My lord. That declaration is not done through Constitution. That declaration must be of based on some law. That law now provides a period of 5 years for such declarations. Hence, that premise, that declaration that's coming out of a law has been given a period. So wo khatam ho jati baat, 5 years then plugs that problem. Election Tribunal has to determine on the basis of qualification, disqualification given in Election Act
as well as 62, 63. Why I am saying is I have also appended parliamentary debate from Senate on the amendment. It's at page 28. They have admitted it's silent. Once they have admitted it's silent, the only requirement. What do you mean? It is admitted is silent. What does this mean? I mean, in parliamentary debate, which we can look into. So why don't you look at the constitution itself? I don't know. देखिए ये from Hebdo. Do you know what Hebdo was? My lord. One dictator, My lord. throwing out everybody. My lord. Followed by another dictator, throwing out everybody. Following by a third dictator, throwing out everybody. Are you forgetting all these things? No, please, एक second ठहरिए ना. The constitution, original constitution did not have these D, E, F, G clauses. My lord. These are imposed by a dictator, correct or not correct? Right. Why you give it no importance? Either say we support dictatorships. Hang on, ऐसे नहीं होगा ना. We can, जरा बात तो सुन लेना. आइन का तकद्दुस उसी वक्त होगा जब हम उसका तकद्दुस मानेंगे, या हम कहते हैं हम बंदूक का तकद्दुस मानते हैं. जब पार्लियामेंट में जो 326 लोग बैठ करके कानून साजी कर रहे हैं, जो अब 326 से पहले कम होते थे, वो एक कानून साजी कर लें और उन्होंने ये किताब हमको बना के दे दी, और फिर एक शख्स टहलते हुए आते हैं, वो कहते हैं बाहर जाए कॉन्स्टिट्यूशन मैंने एब्डो कर दिया. तमाम पाकिस्तान के सियासतदान इंक्लूडिंग माय फादर वाज डिस्क्वालिफाइड बिकॉज ही हैड द मिस्टेक ऑफ helping make Pakistan. But a general, you prevailed over everyone. You are not even attending the constitutional thing. You are supporting everything done by a military dictator, having precedence. Now show us this thing. Then the next dictator comes along and says, no, I introduce graduate condition. The third dictator comes along and says, no, I introduce Sadiq, Amin, righteous, profligate. अगर देखिए एक कॉन्सेप्ट है मुनाफिक का कॉन्सेप्ट. मुनाफिक काफिर से बुरा होता है मेरे हिसाब से. काफिर को तो पता नहीं रोशनी उस है नहीं. काफिर कुफर का मतलब है खिलाफ, ठीक है, उसको पता नहीं. मुनाफिक को पता हो क्या करता है. अपने ऊपर क्यों नहीं कंडीशन डाल दी है कि आई विल नॉट बी नॉन प्रॉफिलिगेट अमीन वगैरह. ये चीजें पिक एंड चूज करना, किसी को उठाना किसी को फिट करना, ये बातें अब व्हाई यू नॉट अटेंडिंग द लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट. यू आर ट्रीटिंग दिस एज अ सिविल सूट. यू आर सेइंग अ डिस्क्वालिफिकेशन बाय मिलिट्री डिक्टेटर. A rapist can contest elections, but a person who makes a mistake, उसमें ये भी लिखा है कि कितने तोले सोना आपके पास है, ठीक है, आपने 6 लिख दिया, मालूम आपके पास 8 थे, तो यू आर डिस्क्वालिफाइड. आप आज हमारे सामने खड़े हुए हैं, हम आपको होल्ड करते हैं कि बुरा ना माने कि यू आर अ प्रॉफिलिगेट, यू वेस्टेड द टाइम ऑफ द कोर्ट. कल आप इलेक्शन में तक नॉमिनेशन पेपर आएंगे, आप कहेंगे देखिए ये जजमेंट लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट, ही इज डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ टू बी अ प्रॉफिलिगेट, ही वेस्टेड द टाइम ऑफ द कोर्ट, यू आर डिस्क्वालिफाइड. So let's not forget small things. We start focusing on small things. Let's look at the larger picture. Look at the context in which these amendments were brought into the Constitution. Look at Article 225. उसको हमने totally नजरअंदाज कर दिया है. Except you're not even saying a word about Article 225. It says no court shall. वहाँ आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट नो कोर्ट में नहीं आएगा डेफिनेशन में, यहाँ कोर्ट में आ जाएगा. तो ये जरा आप जरा टोटलिटी में बात कीजिए. Let me submit. I was referring to, if you look at the amendments, 62(1)(f) was amended in. First of all, is it a good amendment? It was amended. I'm asking your opinion. I'm talking about 18th amendment. I'm asking your opinion. 85 not good amendment, but 62(1)(f) is good. I'm talking about 18th amendment. क्या उसको छोड़ दीजिए, अमेंडमेंट भी तो गन पॉइंट्स पे हुए हैं, क्या बातें कर रहे हैं. वो लोगों ने कहा कि चलिए आधी जमहूरियत आ जाए पूरी से तो बेहतर है. प्लीज आप देखिए ना, मिलिट्री डिक्टेटर्स के सामने आप लोग कोई बात ही नहीं करते हैं. आप सवाल का जवाब दें, खुद में फिर जो कहना चाहते कहें, जो सवाल का जवाब आप कर लगे. I agree with you. I am against dictatorship. I am for the Constitution. Reflect this in your arguments. What I am submitting is, when they amended and added a law, court of law, declaration by court of law in 62. At the same time, they added 10A.
They gave ये तो पार्लियामान ने किया. ये भी पार्लियामेंट ने किया 18th अमेंडमेंट में. This was 18th also- amendment is a validation. Please don't equate it with amendment thought out by the parliamentarians. जितनी भी आप उनको हकारत की नजर से देखेंगे वो हमारे elected representative होते हैं. ठीक है, उनकी cumulative wisdom है. Surely it prevails over the wisdom of a military dictator. My lord. So why are you disregarding the wisdom? Why is the constitution being just, if it's a dictator, we cannot touch it? ये नहीं करें ना. आप मजीद point argue करें. I am submitting my arguments on the basis अच्छा, of, next point बताएं क्योंकि you're not making headway now. You stopped. my lord, my next point is that when they brought in amendment in section 232 of the Election Act, Article 62(1)(f) is silent regarding period of disqualification. I have appended a copy of Senate's proceedings, which says Well, we don't need to. It's obvious it's silent. it's silent. Yes. Now, my submission is once they have admitted that it's silent, they have to bring in constitutional amendment. So let's put it another way. My lord, Suppose we say 232 is not good law. my lord, And we also hold that judgment of the Supreme Court is also not good law. my lord, Then there is no disqualification at all, not even for a day. my lord. Yes? Yes. Then they have to amend So you say the Constitution. wisdom of 5 gentlemen sitting in this courtroom overpowers the wisdom of 326 parliamentarians sitting on in the next building. For what reason? Give us a reason. Give us some logical reason. I mean, just because it said so. That's all. Parliament had the power to fix 5 years in Article 62(1)(f), बात नहीं समझ but they रहे हैं. did not. अच्छा, चले आगे बढ़े ना, थोड़ा डिबेट को आगे ले चलें. देखिए अगर इंटेंशन होती लेजिस्लेचर की, वकील साहब, अगर लेजिस्लेचर की इंटेंशन होती कि कोई सजा होनी चाहिए, जैसे 63 में बताया गया कि अगर किसी भी ऑफेंस में कन्विक्शन हो, कन्विक्शन पूरी होने के, सेंटेंस पूरी होने के बाद 5 years और 3 मुख्तलिफ बताए, 5 years 3 years, उन्होंने पीरियड बता दिया. तो क्या इनका इंटेंशन नहीं था कि यहाँ पे पीरियड ना बताने का, सिंपली इट इज If they had the number and the intention, they would have expressly mentioned it in 62(1)(f), like they did it why in. not we should consider it as positive कि इसके कोई सजा ही नहीं है, पर कह दिया कि फलां शख्स झूठा है, बस that's all. या प्रिज्यूम किया जाए हर शख्स सच्चा है unless proved to the contrary. ये अल्फाज भी लिखे हैं, हर शख्स. If you look at- क्यों प्रिज्यूम करें कि वो झूठा है जब तक वो साबित The Constitution is silent about period of disqualification, which Constitution. Actually, next point पे चले ना. You are repeating yourself now. So your second A argument. lot of people to be heard. Second Let us sort of speed it argument up, is that please. only constitutional amendment would have done this. ये My lord, Go. that is my Aage submission, chalo. only constitutional We understood amendment. And I support this argument with this thing as well in Article 62. They have given various period of disqualification, 3 years, 5 years, 4 years, depending on the gravity as Parliament thought at that time. Sorry, repeat yourself. ये आपने repeat yourself. I didn't understand. Article 63 has given 3 different periods of. So I can just pose you a question. If in Samula Baloch, I'm writing now the judgment of Samula Baloch, imagine it. And I say that 62(1)(f) does not prescribe the period of disqualification. However, I will see the other provisions of the Constitution and say that since for treason it's only 5 years disqualification, I think this is a lesser crime and I put 2 years. Suppose it would be as valid a judgment as Samula Baloch, correct? For no logical reasoning. It is what I decide. I have to base my decision, a constitutional interpretation on some logic. Either you should say, I would be wrong in saying 2 years because you just picked out a number from your head,
It could be 3, it could be 4, it could be lifetime. Please address this query. There could be only two possibilities. No, why not 2 years? I write Samiullah Baloch and say 2 years. It's not written there, Exactly. So it's all up to do with my mind. but it's Nothing not to do with the written- constitution. It's not written otherwise as well. चलिए मगर ये आप इसको अटेंड करें ना इस If बात it's को. silent, that means Understood your point. until it's in field. चलिए अगला पॉइंट या फिर हम किसी और से पूछें. this larger bench can revisit its own judgment. This larger bench can revisit its own judgment. That's Reinterpret. Election Amendment Act 2023. Now, my submission is if we are in 187, then I can object on the vires of Election Act 2023. If we are only in appeal, then we cannot argue on the vires of the Election Act. और तो वैसे ही चैलेंज नहीं करते उसे. You have not challenged varies of 232. That's not the question. Of It's not the question. Varies of 232 is not. Nobody has challenged the varies in the High Court or in this court. My lord, it has been challenged in the High Court. I've given you the That has petition. not been decided yet. That is the thing. हमारे सामने नहीं है. My submission is, if we, because my lords have combined all these appeals along with section 194(3) petition. So my understanding, the way I Your read the understanding should be found. The answer is in the order, the first order that we passed. Since election are scheduled for 8th of February, one returning officer will do one thing, another officer will do one thing. There should be clarity. It's as simple as that. Now, if you want utter total confusion in Pakistan, that every constituency, one returning officer is saying, I will follow 232, another returning officer will say, I will follow Samiullah Baloch. So we have stated very clearly we want clarity. One way or the other, the returning officer is not a competent lawyer as yourself. It's maybe a bureaucrat. So give him clarity. That's all we're doing. That's what I'm submitting before my lordship. While you are hearing this, you have also issued notices under section 27 or order 27A to all advocate general and attorney general. The world, to the whole of Pakistan, we issued notice. You might as well decide upon the vires of this thing. नहीं वो भी कर लेंगे. आप बता दें अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. That is my submission. कह रहे अनकॉन्स्टिट्यूशनल. मैं कहता हूँ इस unconstitutional. I rely on Bas Mohammed judgment. एक बार बताया दे कि आप कह रहे हैं कि ये क्लियर पार्लियामेंट ने खामोशी इख्तियार की 62 और F में कुछ बताया नहीं, उसको हमने इंटरप्रेट किया. अब हमारे बाद पार्लियामेंट ने इंटरप्रेट कर दिया. क्या पार्लियामेंट का विजडम हमसे ज्यादा है या कम है एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को एक्सप्लेन करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए? किसके इख्तियारात ज्यादा, ये बताएं. Parliament has to frame, my lord has to interpret. They have framed the law, they have framed the law, They had to interpret the constitutional provision. उन्होंने कह दिया कि ये हमारा विजडम था. They had to frame it under 239, 238, 39. They had to bring in constitutional amendment. आप लिखा दे बास काकड़ की citation लिखा है 2012. PLD 2012 Supreme Court 923. And what paragraph are you relying for the Para 50. for declaring the law ultra vires? Declaring the law ultra vires. So लेजिस्लेटिव एंट्रीज के ऊपर वो केस है, उसके अंदर तो उन्होंने होल्ड किया है कि लेजिस्लेटिव एंट्रीज जो Thank you. Anything else? Huh? Sorry, we are giving you a tough time, but we want sometimes tough questions help us resolve my lord, our own difficulties we are having in understanding things. my lord. Thank you. very much for giving patient attention. Nani, thank you very much. Who will next? माइकल्स को हम पूछ लें या आपका? नहीं, आपकी कैटेगरी में जो आप अपोज कर रहे उस्मान साहब हैं. आ जाइए. और सब्जवारी साहब कहाँ हैं? सब्जवारी साहब. सब्जवारी साहब पहले करेंगे या आप करेंगे? एक सेकंड. ही सीनियर, विल आस्क हिम फर्स्ट. सब्जवारी साहब, आप जो मजीद पॉइंट्स ऐड करना है तो आप कर दें. My Lord, I gratefully adopt the arguments of my friend, and my case is also. हाँ, बड़ा अच्छी तरह से उन्होंने आर्ग्यू किया.
जी sir. जी I owe an explanation, my lord, clarification. थोड़ा सा माइक की तरफ आ जाए इधर माइक हाँ While gratefully adopting his arguments, I want to offer an explanation, clarification that in my case of Mr. Mohammad Kashif, that is my lord, CP number 2680 of 2021. I am questioning the order of the returning officer who found him disqualified because he had relied on a fake degree in past. The returning officer's verdict was set aside by the tribunal by an appropriate judgment. Dated 4 of May 2023 at page 9 of the paper book, my lord. Then a writ petition was moved, and in that writ petition, the order of the tribunal was set aside and that of the returning officer was restored. Zawari Sahab, you support the lifetime disqualification? My lord, I am telling that what is the point involved in my case. In fact, के लिए मैं वजाहत कर दूं और बाकी लोगों के लिए मैं वजाहत कर दूं हम इंडिविजुअल केसेस 5 ईयर बैन है नो बैन है या समीउल्लाह बलूच लाइफ टाइम बैन है तो अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस नेचुरली विल फॉलो जो भी डिसीजन होगा बिकॉज वी आर द सुप्रीम कोर्ट एंड एवरीवन हैज टू फॉलो आवर डिसीजन तो हम आपका इंडिविजुअल केस आप बुरा ना माने हम उसमें टच नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हो सकता है आपकी और भी प्लीज हों वो फिर अलग सुनेंगे जी तो ठीक है जी फिर तो अब हम सिर्फ वो आईनी नुक्ता और कानूनी नुक्ता देखना चाह रहे हैं मेरे फादर दोस्त ने तो आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनको सपोर्ट करता हूँ एक थोड़ी सी बात ही कहता हूँ जी जी कि the original constitution framers could provide the time limit also in 62F. तो एफ था ही नहीं ओरिजिनल में कर रहे हैं ना support 18th amendment से पहले They could do so, amendment. As far as the amendment, your lordship were very rightly pointing out, okay, that was brought by a dictator, but then there were subsequent parliaments, and they. ये बात सही है आपकी ये बात सही है और फिर वो my lord जो आया है 62 में amendment की है 2010 में उसमें contrary कोर्ट किया ये बात आपकी सही है बिल्कुल दूसरी ये है कि ये जो इंटरप्रिटेशन हुई है मेरे फादर दोस्त ने उस पर बहुत अच्छा एड्रेस किया जी कि जो वो जजमेंट आई है दैट इज जजमेंट लॉ समी साहब के केस में जजमेंट लॉ और जजमेंट लॉ जब आ गया तो वो उसको जब उसके कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट होंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से वो हो सकता है इससे नहीं हो सकता बाकी मेरी सबमिशन ये है जी कि जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं जैसे मैं हुआ हूँ जहांगीर तरीन साहब हैं या कोई दूसरे हैं वो चूंकि विदाउट ट्रायल हुए हैं विदाउट प्रॉपर इंक्वायरी हुए हैं विदाउट एविडेंस हुए हैं आपके क्लाइंट डिस्क्वालीफाई हुए हैं जी उसको उसके पेपर रिजेक्ट किए ना जी उन्होंने लाइफ टाइम जी नहीं इस केस में जी एक इलेक्शन था जो तो आप उनको फिर क्यों सपोर्ट कर रहे हैं खुर्रम रजा साहब को नहीं खुर्रम रजा साहब को तो आप कह रहे हैं आपके क्लाइंट डिस्क्वालीफाई हुए हैं या आपका मुखालिफ डिस्क्वालीफाई नहीं जी मेरे क्लाइंट डिस्क्वालीफाई हुआ तो आई एम कंफ्यूज देन व्हाई यू मैं ये कहता हूँ ना जी कि वो जो पोजीशन है कि वो पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए जो दो जजमेंट लाइफ टाइम को आप सपोर्ट करते हैं आप कहते हैं कि अगर इंक्वायरी होती तो आपका क्लाइंट मैंने सर अर्ज कर दिया जो अल्लाह दीनू केस है और जो केस है उसका सरदार आप कह रहे हैं कि आप असूली मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं इवन दो आपका क्लाइंट डिस्क्वालीफाइड हुआ है मैं समझ गया आपकी बात ठीक क्योंकि वो बेसिकली डिस्क्वालीफाइड नहीं है ये है जी चलिए और दूसरी ये है जी कि ये जो है ना इसमें जो चीजें जिक्र की गई हैं
होने चाहिए। एक बात आपसे पूछ रहे हैं, ये जो आप कहते हैं ना डिग्री जाली डिग्री थी, रिपीट ना कीजिए, पॉइंट बाय पॉइंट बताइए जी, जल्दी बताएं। माय लॉर्ड, आप उनके आर्गुमेंट्स अडॉप्ट कर रहे हैं या नहीं? माय लॉर्ड पार्टली अडॉप्ट करूं लेकिन मुकम्मल नहीं। जी, मैं पहले अर्ज करूंगा डिक्लेरेशन के बारे में। जी माय लॉर्ड, नंबर बताएं केस का। मेरा नंबर है जी 984 984। और 2018 माय लॉर्ड। आपके मुखालिफ आप रिस्पोंडेंट है, अपेलेंट? मैं अपीलांट हूं माय लॉर्ड। अच्छा, उन्होंने क्या किया है जिसके खिलाफ आप आए हमारे पास? उन्होंने मैट्रिक अपने आप को डिक्लेयर किया 2018 के इलेक्शन में। अच्छा, तो आप डिग्री वाला केस पहले चलिए, अब आप लीगल कॉन्स्टिट्यूशन बात करें। 199 के हवाले से मैं अर्ज करूंगा, जो डिक्लेरेशन का क्वेश्चन है कि डिक्लेरेशन 199 के तहत ये मेन फीचर है आर्टिकल 199 का, विदाउट डिक्लेरेशन एंड डिक्लेयरिंग एनीथिंग सुप्रीम ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पास ही नहीं कर सकती। ये राय नहीं मिला फरमाइएगा 199 में मालूम जी। पहला माइलॉट सबसेक्शन सब क्लॉज 1 में पढ़ूंगा, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ए हाई कोर्ट में इफ इट इज सेटिस्फाइड that no other adequate remedy is provided by law. Now I'll go to Roman 2, declaring that any act done or proceeding taken within the territorial jurisdiction of the court by a person performing function in connection with the affairs of the federation, a province or a local authority has been done or taken without lawful authority and of no legal effect. Secondly, my lord, अब सी जो बी का रोमन 2 मुलादा फरमाइए। इस जगह ना उस्मान साहब ये डिक्लेयर कर देगा कि ये आपका नॉमिनेशन पेपर गलत है या आपकी डिक्लेरेशन गलत है ना? जी मालूम, इतनी हद तक ही कर सकते हैं ना डिक्लेयर। नहीं मालूम, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि एक तो मैंने एक एस्पेक्ट बताया, ये डिक्लेरेशन तो उसके लिए है कि एनी पर्सन परफॉर्मिंग फंक्शन इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द फेडरेशन, जी मालूम, सरकार के खिलाफ के लिए, आम आदमी के लिए तो मैं अर्ज कर रहा हूँ। मैं पहला सवाल ये था मालूम का डिक्लेरेशन क्या 199 के नाम से अगला मालूम देखिएगा, इसका रोमन 2 देखिएगा बी का जी। On application of any person made order requiring a person within the territorial jurisdiction of a court holding or purporting they hold office to show under what authority of law he claims to hold that office. ये भी declaration इसको subsequently होगी, वो भी जो वारंटों के jurisdiction है जनाब, ये तो हाई कोर्ट एक्सरसाइज कर सकता है ना। हाई कोर्ट, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, हाई कोर्ट को वारंट जब इशू करती है तो डिक्लेयर भी करती है साथ, सिर्फ ये नहीं कहती कि आप This is the original jurisdiction of the High Court under Article 199. Writ of quo warranto can be issued by the High Court. जी मालूम, This is the only declaratory power यही है। मालूम बिल्कुल ठीक है, यही पावर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी 184(3) में है। चलिए मान ले, आगे बढ़ें। आगे मैं अर्ज करता हूँ मालूम, इसको इस तरह देख लें कि मान लेते हैं ये बात है, तो हाई कोर्ट के सामने कोई डिग्री होगी, कोई डिक्लेरेशन होगी, तो हाई कोर्ट का हाउ यू आर होल्डिंग द ऑफिस, मतलब यही मैं अर्ज कर रहा हूँ। अगर उसके बाद लाजमी नहीं, इलेक्शन लॉज के अलावा भी या इलेक्शन लॉज जी में भी जी, समझे, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आगे ये देखिएगा, मैं दोबारा आऊंगा माय लॉर्ड, ए का सब जो क्लॉज रोमन 1 है माय लॉर्ड, ऑन एप्लीकेशन ऑफ रेगुलर पार्टी मेक एन ऑर्डर डायरेक्टिंग ए पर्सन परफॉर्मिंग विद इन द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट फंक्शंस इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ फेडरेशन, ए प्रोविंस और लोकल अथॉरिटी to refrain from doing anything he is not permitted by law to do or to do anything he is required by law to do without declaring that what is the function of the person who is acting under the federal law or the provincial law. ये declaration नहीं हो सकती, ये ऑर्डर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि declaration इनबिल्ट है इसमें। और इसी तरह देखिएगा माय लॉर्ड बी का एस्पेक्ट है ना इसमें, जो प्रोविजन ये ऑर्डर्स चैलेंज होते हैं 199 में, जो पर्सन परफॉर्मिंग फंक्शंस इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ फेडरेशन और प्रोविंसेस, उनके ऑर्डर जिसके अंदर कोई एडिक्वेट रिलीफ रेमेडी नहीं होती है वो रिट में डायरेक्ट आ जाते हैं। इसी तरह आप देखिएगा बी राइट ऑफ अपील दी हुई होती है तो पहले अपील में जाते हैं। बी का 1 देखिएगा माय लॉर्ड, आप इसमें प्राइवेट पर्संस की हेबियस कॉर्पस के वाले वो भी डिक्लेयर होगी कि दैट इज इलीगल। आप सबसे पहले 199 के ओपनिंग वर्ड्स पढ़ ले, व्हेन देयर इज नो रेमेडी। मानो बिल्कुल ठीक बात है। इलेक्शन लॉज में अब काइंडली सी मुलादा फरमाइएगा। बी ये जो सी है माय लॉर्ड, ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी एग्रीड पर्सन मेक एन ऑर्डर गिविंग सच डायरेक्शन टू एनी पर्सन और अथॉरिटी इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट। अब गुजारिश ये है कि ये डायरेक्शन भी विदाउट डिक्लेयरिंग कि ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आप करने में फेल हुए हैं। बताइए, पॉइंट ये है माय लॉर्ड, आप हमें से पढ़वा रहे हैं। पॉइंट ये है कि डिक्लेरेशन
के बगैर मतलब डिक्लेरेशन दिए बगैर हाई कोर्ट 199 की पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकती। ठीक है, ओके, और इसी कहीं इससे हमारे केस का क्या ताल्लुक हुआ? इसमें क्वेश्चन जनाब ये पूछा गया था कि क्या डिक्लेरेशन हाई कोर्ट प्लेनरी जुरिस्डिक्शन की कोर्ट के अलावा कोई दे सकता है या नहीं दे सकता? मेरी हम्बल सबमिशन ये है। ठीक है, दे सकता है। चले आगे बताएं, आगे बताएं। अगली बात जो है देखिएगा कि सेक्शन जो आर्टिकल 62(1)(f है मालॉर्ड, एक सवाल मालॉर्ड ने ये पूछा था, दो में डिफरेंस क्या है 62 और 63? नहीं मैं इधर यहाँ मैं खुरम साहब से डिसएग्री करूंगा मालॉर्ड। अगर सब आर्टिकल 2 मुलाजा फरमाइएगा ना 62 का ही, उसमें क्वालिफिकेशन का नहीं, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन का जिक्र है। यानी डिस्क्वालिफिकेशन हो या क्वालिफिकेशन हो, उसका मकसद एक ही है, चाहे वो प्री इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन। आई पर्सनली एग्री विद यू। मतलब सब आर्टिकल 2 बड़ा वादे। ठीक है, हाँ आगे बढ़े। जी मालूम उसमें तो इंटरचेंजेबल है ना, जी इंटरचेंजेबल, क्योंकि सब आर्टिकल 2 जो है वही वादे तौर पर कह रहा है। सही है। अब माय लॉर्ड जहां तक ये बात है कि सेक्शन 9 की जो ओवरऑल जो जुरिस्डिक्शन मतलब कोर्ट्स एक्सरसाइज करती हैं, सेक्शन 42 में करती हैं, या कोई और लॉ भी है जिसके तहत वो डिक्लेरेशन की डिग्री ग्रांट कर सकती हैं। और मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि सेक्शन 9 ऑफ द सीपीसी जो है वो बेसिकली जुरिस्डिक्शन देता है कोर्ट्स को टू ट्राई ऑल काइंड ऑफ सिविल मैटर्स ऑफ सिविल नेचर माय लॉर्ड। और उसमें सेक्शन 42 एग्जॉस्टिव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि देयर आर सर्टेन डिक्लेरेशंस व्हिच आर नॉट प्रोवाइडेड इन सेक्शन 42, बट दैट मे बी a dispute between one party or another party, and that can be granted under section 9 of the CPC. So this argument is in my humble submission is not correct, that section 42 is an exhaustive provision, my lord. Now my lord, मैं अब आता हूँ 232 पे my lord. Honorable my lord ने पूछा था कि 62(1)(f) में जब डिक्लेरेशन दी जाएगी तो वो लॉ के तहत दी जाएगी, लेकिन मेरी हम्बल राय में जब भी 62(1)(f) की डिक्लेरेशन दी जाएगी तो कोर्ट किसी को ये डिक्लेयर करेगी कि ही इज नॉट सगेशियस, नॉट राइचियस और नॉन प्रॉफिलिगेट और नॉट ऑनेस्ट और नॉट अमीन। वो डिक्लेयर करेगी 62(1)(f) के तहत। ये नहीं होगा कि लॉ ने उसको इख्तियार दिया हो कि वो कोई ऑर्डर करे और वो ऑर्डर उस लॉ के तहत हो, डिक्लेरेशन इसी प्रोविजन के तहत होगी। इसलिए समीउल्लाह बलोच जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन पर बेस करती जजमेंट है, उसको जब तक रिविजिट ना किया जाए उस वक्त तक सेक्शन 232 62(1)(f) जो है वो अमेंड नहीं संभव, वो उसी तरह रहेगा। आपके कहने का मकसद ये है कि जब तक कोर्ट से ये साबित ना हो, किसी कोर्ट से, कॉम्पिटेंट कोर्ट से, कि ये सादिक और अमीन नहीं है, उसके अलावा आप उसको ये नहीं कह सकते, आप उस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकते। कोई 63(1)(f) यही कह रहा है हमारा, कोर्ट की डिक्लेरेशन जरूरी है, बिल्कुल ठीक बात है। And what is the definition of Sadiq and Amin? Or what is the definition of Sadiq or Amin? इसमें एक चीज देखिएगा, ये जो सब कोई मर्डर करके आ जाए, कोई वो नहीं शुमार। क्लॉज 2 जो है ना मालूम, वो बहुत जरूरी है इसकी, क्योंकि इस क्लॉज में पैरा डी एंड ई जो हैं उनको तो अप्लाई किया गया है मुस्लिम्स की हद तक, एफ को नॉन मुस्लिम पर भी अप्लाई कर दिया गया है। ये बहुत अहम बात है जो हमें, यानी एक नॉन मुस्लिम भी ही इज बाउंड टू बी सगेशियस, राइटियस, नॉन प्रॉफिलिगेट, ऑनेस्ट एंड अमीन। इट मींस कि अमीन का जो लफ्ज है इसका वो मीनिंग नहीं लेना चाहिए जो इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में है, अदरवाइज ये इसकी क्या मीनिंग है? मतलब अमीन का जो डिक्शनरी मीनिंग है, ही शुड बी अमानतदार, ही शुड बी अमानतदार माय लॉर्ड, ही शुड बी अमानतदार। अमानतदार इस्लाम में अमानतदार का लफ्ज नहीं है, लेकिन ये क्योंकि मुसलमानों पर अप्लाई नहीं, ये भी मुसलमानों के अलावा नॉन मुस्लिम पर भी अप्लाई किया गया। कहते ये नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं ये कहता हूँ इसका मतलब ये है कि ये इसके वो मीनिंग नहीं है जो इस्लाम में लिए जा रहे हैं, ये वो डिक्शनरी मीनिंग है, ऑर्डिनरी डिक्शनरी मीनिंग्स जो अप्लाई होने चाहिए। अदरवाइज ये प्रोविजन मुसलमानों ये बाकी आइन तो अंग्रेजी में है, अंग्रेजी का उनको लफ्ज पता नहीं था कि अमीन के लिए क्या होगा। मेरी अमीन जो अगर हम आप कह रहे हैं डिक्शनरी मीनिंग में देखें तो अंग्रेजी की डिक्शनरी में उठाऊंगा, उसमें अमीन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा जो तो मुझे लुगत देखना होगी उर्दू की, ठीक है या अरबी की आप चाहते हैं हम देखें? नहीं, उर्दू देखें या अरबी देखें, हमें नहीं पता, आपसे पूछ रहे हैं।
मैं तो ये अर्ज करूंगा अमीन अगर ओरिजिनली उर्दू का लफ्ज है तो फिर उर्दू की डिक्शनरी आप देखी जाएगी। बताएं ना कौन सा लफ्ज है ये, अरबी का है उर्दू का है? मतलब ये तो उर्दू का लफ्ज है कि लेकिन इसका ओरिजिन जो है वो अरबी ही है, अरबी से ही इसको लिया गया, ओरिजिनली अरबी का लफ्ज है, लेकिन अब अमीन पाक उर्दू में भी इस्तेमाल हो रहा है। जनरल जिया को अमीन का अंग्रेजी लफ्ज पता नहीं था या उनके लॉ मिनिस्टर को नहीं पता था? नहीं उनको पता होगा या नहीं पता होगा। नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ना, बाकी सब अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ये एक अमीन आर दिया। इसका मतलब है कि ये वही इस्लाम में जो इस्तेमाल होता है सादिक और अमीन, इसका मतलब वही है। नहीं मतलब इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि फिर ये मुसलमानों पे अप्लाई नहीं हो सकता, उन्होंने सोचा नॉन मुस्लिम पे अप्लाई नहीं हो सकता। तो क्यों नॉन मुस्लिम भी तो सादिक और अमीन हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन अगर इसकी इस्लामिक टर्मिनोलॉजी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, अगर डिक्शनरी मीनिंग हो फिर तो वो हो सकते हैं, अगर इस्लामिक टर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा फिर ये नॉन मुस्लिम पर अप्लाई नहीं हो ये जो ऐसी चीजें सिर्फ कंफ्यूजन के लिए डाली गई हैं, कोई वजह भी थी? नहीं ये मैं तो कंफ्यूजन तो बहुत पैदा हुई है इस्लाम और गैर इस्लाम में अमीन की डेफिनेशन डिफरेंट है। नहीं मालूम सादिक और अमीन दोनों की, वो एक सच्चा आदमी हो, अमानतदार हो, वो कोई भी हो सकता है। गुड कैरेक्टर का आदमी तो नॉन मुस्लिम हो, मुस्लिम हो, गुड कैरेक्टर की तो एक डेफिनेशन कौन डिटरमाइन करे कि फला शख्स का कैरेक्टर अच्छा है, फला शख्स अमीन है? मतलब ये फाइनली तो कोई खुदा ही डिटरमाइन कर सकता है, हम आप तो कर ही नहीं सकते। सही जवाब आपने दिया, ठीक बात है। माशाल्लाह। अच्छा, एनीथिंग एल्स? आपने बहुत आज पॉइंटेड लिया। ये काइंडली देखिएगा, मैं कुछ अर्ज ये करना चाहूंगा माय लॉर्ड, 232 ये इस पे मेरी 232 पे बताइए आप। इस पे मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि क्योंकि 62(1)(f) जो है उसकी डिक्लेरेशन इन्हीं ग्राउंड्स पर होगी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड हैं, इसलिए समीउल लो जो कि पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समझा जाना चाहिए जब तक कि वो रिविजिट नहीं होता। इसे समझाना चाहिए, ये बताइए ना। एज अमेंडमेंट और इंटरप्रिटेशन। गुजारिश ये है जब कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट होगा तो उसकी इंटरप्रिटेशंस रेलेवेंट प्रोविजन का पार्ट एंड पार्सल कंसीडर होगी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया। आर्टिकल 189 और 190 की बात कर रहे हैं। 189 के तहत वो फॉलो किया जाएगा, ये मेरी हम्बल सबमिशन। सही है, सही है। अब ये ऑनर देखिएगा, अब मैं कुछ अर्ज करूंगा मालूम इस हवाले से कि जो समीउल्लाह बलोच के बाद कुछ डेवलपमेंट्स हुई वो बहुत रेलिवेंट हैं इस बात ये को। मुझे एक सवाल का जवाब दे दें। द सेम लर्नेड ऑथर जज हैज आल्सो ऑथर्ड द जजमेंट इन फैसल वावडा केस, मैं उधर ही आ- उसका जिक्र था लास्ट टाइम पे। बिल्कुल होता है। तो कैन यू रिकंसाइल द टू जजमेंट्स, यस और नो? यही मेरा पॉइंट है, मैं अब आज इस पॉइंट पे रहा हूं कि समीउल्लाह बलोच किन बिना पर रिविजिट हो सकता है। पहले तो फैसल वावडा के कैन यू रिकंसाइल देम और नहीं हो नॉट? सकता मालूम, लेकिन उसकी नहीं वजह हो से सकता है। लेकिन उस वजह से क्या समीउल्लाह बलोच रिविजिट हो सकता है या नहीं नहीं, हो मैं सकता, आपसे ये सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। देखिए, रिकंसाइलेबल नहीं है, नहीं है नहीं है रिकंसाइलेबल। ठीक। एक और भी मैं अगर इसी प्रिंसिपल को ले लें तो इसका मतलब है सादिक और अमीन अगर आज नहीं है तो कल हो सकता है वापस सादिक और अमीन। जी बिल्कुल ठीक बात है। यानी एक व्यू अगर मेरी है हेलो आज और कल वो व्यू बदल जाती है, तो इसी तरह अगर मैं आज अमीन नहीं हूँ कल अमीन हो सकता हूँ, या आज अमीन हूँ कल बिल्कुल ठीक अमीन बात नहीं है। इससे मेरी तो यू आर बीइंग वेरी फेयर। आगे बढ़िए। अब जो ऑनर देखिएगा PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 591 फैसल वावडा तो जनाब ने बिल्कुल नोट फरमा लिया। दोबारा आहिस्ता आहिस्ता बताएं। PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 591 नाम बताएं जजमेंट है जी अलादीनो भाइयों केस मालूम। ये रिव्यू जजमेंट है, ओरिजिनल जजमेंट जो अलादीनो भाइयों की है ना जो ऑनर, दैट इज 2013 SCMR 1655। दोबारा कहिए आहिस्ता आहिस्ता। 2013 SCMR हाँ 1655 जी। समीउल्लाह बलोच में अलादीनो भाइयों को कोट किया गया और ये कहा गया कि समीउल्लाह बलोच ये करेक्ट लॉ कहता क्या है अलादीनो भाई? अलादीनो भाइयों का जो ओरिजिनल जजमेंट है ना जो वो ये कहता है योर ऑनर, इसका 1657 है रेलेवेंट पेज मालूम। 1657 क्या कहता है? इसमें दुआनी अर्ज करता हूं, उसमें उन्होंने कहा कि लाइफ टाइम